Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Shalom, people of God. Shalom. आप सबकी सलामती हो। पास्टर नवीद शहजाद लाहौर पाकिस्तान से आप सबकी सलामती चाहता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुदा के हाथ के नीचे हैं, उसके वादों में महफूज हैं, उसका चेहरा आप पर जलवागर फरमाया गया है और उसकी रोशनी से मुनव्वर हैं आप। आपकी लाइट इंक्रीज हो रही है, आपकी लाइफ अबंडेंट लाइफ में ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है रादर, और आपने लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया। खुदा में खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी हो। आज शाम मेरा ईमान है आप सब खुदा के फजल और उसके अपॉइंटेड सीजन के मुताबिक अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी वॉक में खुदा के साथ चल रहे हैं। और अगर कोई नहीं चल रहा तो वो उम्मीद रखे, क्योंकि मसीह जो जलाल की उम्मीद है, क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी, वो आप में है। उसको आपसे उम्मीद है और आप उससे उम्मीद रखें कि वो आपको राइट ट्रैक पर ले जाएगा, वो आपको राह दिखाएगा कि उस पर चलना है। और आई बिलीव कि आप लोग सब के सब जितनों को उसने अपनी बादशाही में बुला लिया है, उनको वो निकालेगा नहीं जब तक कि आप खुद उसके मुनकर नहीं होते, ईमान के मुनकर नहीं होते। आई अप्रिशिएट यू। अगर आप यहाँ मुझे देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है या इसको और बेटर किया जा सकता है। ऑब्वियसली हम और बेटर करेंगे। हम एक नए प्रोजेक्ट पर, ये गुड न्यूज़ है, काम कर रहे हैं, जिसमें मैं जल्द में भी खुदा ने तौफीक दी तो इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में मैं यही बताने के लिए आज लाइव हुआ हूँ कि जल्द हम कुछ 2 या 3 प्रोग्राम्स को लेकर आएंगे, जो एक टोटली मेरे फेसबुक ऑडियंस के लिए होगा और एक यूट्यूब फॉलोअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए होगा। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस अनएड्रेस्ड हैं यूथ के ख़ास तौर पर, और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा सोशल मीडिया पर जितनी फैमिली है, फिर पार्टनर्स हैं, वेल विशर्स हैं, उन सबों का जिन्होंने मेरी इस बर्थडे पर फर्स्ट को मुझे प्रेयर्स के साथ कवर किया, मुझे विशेस में याद रखा और मेरे लिए किसी भी तरह से मोहब्बत का इजहार किया है, तो गिविंग किया है, तो पार्टनरशिप हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। मैं भी उसको एक्नॉलेज करता हूँ और थैंक यू सो मच आपके लाभ के लिए। ये फ्यूल का काम करता है। सो इस साल मैंने ये तहैया किया है, ये अहद किया है, और मैं खुदा के फजल से, उसकी दी ग्रेस से जो दी गई है मुझे, उस तौफीक के मुआफिक ज़रूर कलीसिया की हेल्प करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर यूथ की, नौजवानों की। नौजवान जो, मैं आपको वाज़ेह बता दूं, एक बहुत बड़ा गैप है और जो कि क्रिएटेड है। शालोम शालोम। मैं देख सकता हूँ आपके कमेंट्स को, अगर आप यहाँ पर हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर सकें। तो मैं ये बताता चाहूँ कि एक बहुत बड़ा गैप मैंने फेस किया है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, जहाँ पर डिसाइपलशिप और टीचर का गैप, और जहाँ पर सनशिप और फादरहुड का गैप, और जहाँ पर क्या कह लेंगे, एक एज गैप भी मुझे नज़र आया कि
एक रवायत सी, एक ट्रेडिशन सा चल पड़ा है जिसमें सिर्फ पास्टर्स को पीपल एक्सपेक्ट के वो एजड होंगे, ओल्ड होंगे तो तभी वो पास्टर्स हो सकते हैं। होंगे, मैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करता, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, जितने मेच्योर हों। लेकिन उसका जो गैप क्रिएट हो जाता है उस पर किसी का फोकस नहीं रहा। मैंने ये सफ़र किया है अपनी स्पिरिचुअल वॉक में, जिसको मैं फील करता हूँ, पेन को फील करता हूँ। वाई यंगस्टर्स आर फॉलोइंग यंग पीपल, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो गैप नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कोई उनकी रीच में रहे, वो चाहते हैं कि कोई उनके करीब हो जिससे वो बातचीत कर सकें, वो ओपन हो सकें, खासतौर पर उनके बहुत ज़्यादा प्राइवेट जो क्वेश्चन हैं, कंसर्न्स हैं, उनको रिलेटेड। ऑब्वियसली बाइबल मुकद्दस एक ज़ाब्ता हयात है, हमारे लिए एक कोड है लाइफ का, लेकिन सबको इसकी समझ भी नहीं है। और जिसको समझ है वो अगर इतना गैप रखेगा, खासतौर पर मैं यूथ से, क्योंकि यूथ स्ट्रगल करती है। मैंने देखा है, मैं जिस चर्चिज से ब्रॉटअप होकर वो आया हूँ, मेरी ब्रॉटअप हुई है, यूथ थी, यूथ है भी, बट स्टिल यूथ और लीडर का गैप मेंटेन है। वाई? मे बी यूथ ज़्यादा एजुकेटेड है, वाई? मे बी यूथ एज गैप को कंसिडर कर लेती है, मे बी यूथ किसी की तरह से ईजी नहीं फील करती कि वो ओपन करे, या वो रिलायबल नहीं समझते, या वो सीक्रेसी, प्राइवेसी को मेंटेन नहीं समझते कि अगर पास्टर यहाँ की बात वहाँ पहुँचाता है, वहाँ की वहाँ, और यूथ को पहले ही वो बातें पहुँच चुकी हुई हैं कि पास्टर से बात किसी फैमिली ने की और वो बात आगे पहुँच गई है। तो दैट्स द रीजन जिनकी वजह से यूथ ओपन नहीं होती और वो बर्बाद होती है। अब क्वेश्चन ऐसे हैं जो एड्रेस करने बड़े ज़रूरी हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि इस साल मैंने खुदावंद के हुजूर ये फजल मांगा भी है कि ज़्यादा मुझे हासिल हो, और मेरी मीडिया टीम को भी, और आई प्रे कि ये हमें दस्तयाब रहेगा। और इस ईयर में जो नया साल मुझे खुदावंद ने दिया है, मैं वीकली बेसिस पर खुदावंद ने हमें तौफीक दी तो at least twice, once for the Facebook social media, once for the YouTube channel। जो ऑडियंस वहाँ पर है, हम ज़रूर आएंगे, और एक हम सेगमेंट ऐसा रखना चाहते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स को हम एड्रेस करेंगे, टोटली क्वेश्चन आंसर। एनोनिमसली आप पूछ सकेंगे, आप सीक्रेटली पूछ सकेंगे, आप व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। आज मैं एक दो क्वेश्चन एड्रेस कर देता हूँ यहाँ पर ही। एक प्रोग्राम हम टिपिकली करना चाहते हैं, व्हाट द बाइबल सेज। मेरे दिल पर ये बोझ है कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है, यानी हम क्वेश्चंस को बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में जाकर देख लेंगे। और एक हम प्रोग्राम ऐसा रखना चाहते हैं, वो मेच्योर लोगों के लिए होगा, व्हाट द स्पिरिट सेज, कि रूह क्या फरमाता है, कलीसिया से खुदा का रूह क्या फरमाता है। दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। अगर तो सिर्फ वर्ड ही फरमाता होता तो ये बात बाइबल में भी ना लिखी जाती कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जिसके कान। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रूह बाइबल में से नहीं फरमा सकता, बोल सकता, बट रूल कुदस की मिनिस्ट्री आज भी जारी है, ये मैं बिलीव करता हूँ, और रूल कुदस बाइबल से हटकर भी बात कर सकता है। सो हम उसको कैसे देखेंगे चीज़ों को, वो आगे चलकर आपको बताएंगे, उन प्रोग्राम्स में आपको समझ आएगी। वी विल बी टचिंग spiritual discussions, spiritual realms, we'll be touching spiritual areas, teachings जो कि शायद सेमिनरीज में या बुक्स में अवेलेबल नहीं होंगे। सो प्लीज गेट रेडी एंड स्टे एक्साइटेड, और हमारे लिए दुआ करें। My senior man of God from, if I'm not wrong, Zambia, shalom and welcome you in the broadcast. My senior man of God, Dr. Elijah Bichali is here, and let's welcome him. He's here around. Thank you so much, man of God, for joining, and it's a privilege that you are watching.
I honor, I celebrate the life and the grace upon your life. Thank you so much. So, yeah, someday definitely we will be doing a program here online on my channels. So we are going to do it. We are going to plan it with you, please. If you are available, then we will host you online here, and then you minister to the congregation in this nation, and they shall benefit from the grace upon your life. Shalom, shalom, all of you. I'm seeing you, all of you. Those who are watching, you can share the broadcast. There is a good news. I'm sharing, we are coming with at least 2 segments. What the Bible says, and the other segment will be what the Spirit says. So we are going deeper. We are touching deep things. Deep calleth unto deep. Those who are thirsty and hungry for the depth, the deep mysteries and the revelations, we are going to unlock them. We are going to reveal them to the congregation in this nation. And obviously, your support, prayer support, number 1, and then comes the ethical, the moral support by sharing, by commenting, and by informing others around you. We need it very much. And then the third one is the financial support. You need to support the kingdom work. You need to support the kingdom, the finance, and definitely this will be gathered in the heavenly treasures. So God will definitely reward it, record it, and reward it accordingly. And the people will be blessed. I'm sure you are blessed, and God will reward it. If you are watching me, you can comment now. I'm just watching your comments. Those who are watching, shalom, shalom. Who else is watching? And yes, sister, the daughter in the Lord, Zubia Kamal, is watching. My son, Pastor Amar, is watching. My daughter Sarah, my daughter Ribka, wow. My dear sister Shaina is watching. Rohabam Cooker, God bless you. God bless you. Sabah Adri, sister Sabah. God bless you, my daughters Sifayat Gill. God bless you for watching. You can share. My son evangelist Sam, shalom, shalom. US is here, and Africa is here because of man of God Elijah Bichali, and Pakistan is here, Saudi Arabia is here. Who else is here? God bless you, God bless you. I'm so excited that we are coming up with good things, good stuff. We are coming up with the mysteries. We will teach you what the Spirit says. We will teach you what the Word. Because we don't want people to be dragged out of the Word of God, the theological systems, the systematical theology, and the biblical theology, and the charismatic as well. We will touch that area. But we want people to know about the Spirit things as well. Because we believe the ministry of the Holy Spirit is still in continuation. It's not ceased. My beloved sister Sneha Wilson is watching. Blessings. If you are watching, you can share with others. Who is watching else? Who else is here? God bless you. So एक क्वेश्चन मेरी एक टीचिंग में से किया गया कि कहाँ पर हुमा कोकर शलोम, गॉड ब्लेस यू, अपने शहर का नाम टाइप कीजिएगा प्लीज. जिनको मैं नहीं जानता प्लीज 1-on-1, जिनको मैं नहीं जानता वो अपने शहर का नाम जो है मुझे जरूर बताइए. अपने शहर का नाम बताइए एंड गेट एक्साइटेड. हम यूथ को एड्रेस करने वाले हैं. इट विल बी अ स्पेशल बूस्ट इन द स्पिरिट. एक बूस्ट मिलने वाला है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इन टीचिंग्स के वसीला. स्टे कनेक्टेड. यूट्यूब पर और फेसबुक पर वी आर कमिंग अप विद द स्पेशल टीचिंग्स. बिब्लिकल क्वेश्चंस को भी हम एड्रेस करेंगे. यू कैन आस्क क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा. और वी आर कमिंग विद पॉडकास्ट एज वेल. हम जल्द उनको भी लेकर आ रहे हैं. और अगर
खुदा मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं पॉडकास्ट में दूसरे गेस्ट को भी ज़रूर इनवाइट करूँगा जिनको मैं चाहता हूँ कि वो आए। गॉड ब्लेस यू। चंदा सुलेमान फैसलाबाद से शालोम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। यू कैन फॉलो द यूट्यूब चैनल एज वेल, क्योंकि हम एक प्रोग्राम में भी थोड़ी देर बाद मैं यूट्यूब पर भी हूँ और यूट्यूब पर भी एक दो बातें हम जरूर करेंगे। उमा खोखर, गॉड ब्लेस यू। उस्मान की सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। माय सन्स सिस्टर इज देयर, गॉड ब्लेस यू। सो एक क्वेश्चन किया गया एक बहन की तरफ से, मेरी एक टीचिंग के यूट्यूब पर पड़ी है, संडे सरमन में से एक क्वेश्चन रेज हुआ कि जहां मैंने बोला कि सिकनेसेस को मौत यूज करती है, मौत, द डेथ uses the sicknesses and she blames the sicknesses and the causes to kill other person. और डेथ को अभी कंट्रोल नहीं किया गया, डेथ को अभी जज नहीं किया गया इन द स्पिरिट रैम। सुनिए ध्यान से, मैं टीचिंग की तरफ आ रहा हूँ। कुछ 4-5 दिन की बात है और मुझे स्पिरिचुअल रैम में मरीना बर्नार्ड, शालोम शालोम शालोम। माय सन हारून, गॉड ब्लेस यू शालोम। स्पिरिचुअल रैम में मैं, अगर आप देख रहे हो शेयर करो। दानिश शालोम शालोम। Who else is there? Now man of God Elijah B. Jali is there, and I want to continue in Urdu language, but because of him I would just continue in English language. So please bear with me. If you don't understand, I will do it in Urdu. If you don't understand, you can type I don't understand, then I will repeat it in Urdu for you. Few days ago, I was in the spirit realm and I was in a warfare. And in that warfare, I got an opportunity when I heard the voice, a voice. The voice said that arrest this spirit. And I thank God, because it was an opportunity for me now to finish the warfare, to finish. I started thinking within myself that now it's time to wind up it. I declared, I as a judge, because I felt it within me that now I'm in the courts, and in the courts I have a position in the judiciary system. I have a position of a judge. Suddenly I felt in my spirit, now I am a judge, now I can declare it. I announced that judgment. I gave the decree that I arrest you, you spirit, I arrest you. Now again, there is a difference. I was teaching my sons and daughters a few days back. You can cast out demons, but there is another manifestation, there is another rank of the darkness, and that rank is of the spirits. When it comes to the spirits, there are some spirits you cannot cast them out. The only solution is to get rid them of. The only solution is just to get rid. Either you cast out that person who is influenced by that spirit. Let me explain. For example, we take a religious spirit. For example, we take a religious spirit. Try to understand. Now, religious spirit operates on the nations at the national level, and religious spirit operates within the church setup as well. So, what happens when a religious spirit is actually operating against you? At the national level, Jesus and Apostle, they taught to not to dishonor the hierarchies. In Jude, you read about it. In Romans, you read about it. Even Paul asked to pray about them, for them, the authorities.
And you see that we are not supposed to stand against the authorities at the national level. And when it comes to the national level, the higher authorities, the government officials, they are above you in that territory. And if they are influenced or they are possessed, and religious spirit is actually controlling the systems, then you don't stand against them, you don't disown them, you don't dishonor them. You get rid of the situation. You relocate yourself. You change the location. Jesus taught about this one. If you face persecution, you run towards another city. You don't go in praying and fasting. You run. You run. There is a spirit. You see the spirit of lust. The fleshly thing is there. The lustful nature. Then you run. You flee. Paul asked his spiritual son Timothy, you run. Now come back to the point. When the authority is above you in the national setup and is influenced by the spirit, you run, you get rid. If the prophet is not recognized in the territory, then the prophet can go to another territory where his call is recognized, where he is accepted very well. It's allowed in the word. And you see prophets moved from one location to another. Now, when it comes to the church level, in the church setup, for example, take me as an example. I'm the head of the church. God bless you, those who are watching me. I'm the head of the ministry, the chief, the founder, the overseer of the ministry, the general overseer. So if someone is operating in this religious spirit, I will follow the word. Now I am the authority above this hierarchical structure. I'm the general overseer. Now I can operate this authority. I will try to deal with this person. I will try to set him free with the word. Because these demons, most of the time I have never seen actually it's manifesting in anyone. This religious spirit, it kills the prophets, the apostles. You read about this one in the New Testament as well. Jesus said, you Pharisees, you Sadducees, you killed every prophet. So what I will do, I will try to save this person. If that person is not ready, then I will just cast him out. I will get rid of this person who is actually disobeying the hierarchical structure within the church setup. Outside the church setup, it's not my jurisdiction. In the spirit realms, what I'm saying, in the spirit realms, there is a judiciary system. I cannot operate above me. And within my territory, I will operate because I'm the authority. So, can I give you the reference? In the book of Revelation to a church, the Lord actually complained about the person who was influenced by the Jezebel. And the Lord complained to the pastor, to the angel of the church, that you did not cast this out. You kept this person inside. The person who is actually calling herself a prophetess, but she was not. So the solution was there, the authority was there with the pastor, with the angel of the church. But that angel was not operating into the authority, into that authority, specific authority to cast out. It's not every time you gather people in the church. You read about Paul. Paul actually cast out 2 people. He mentioned the name, cast them out. Give them in the hands of the enemy, in the Satan. So their spirits are delivered actually. Their bodies must be judged well. So when the day of the Lord comes, their spirits are redeemed. In Corinthians, you will read it about it. So what I am saying, come back to the
First point, I was saying I was in a spiritual warfare and I dealt with that spirit. I just differentiated in between demons and spirits. Demons, when they manifest, they manifest. You can discern easily in the physical. But spirits, you need discernment, because in the physical might they not give you any sign that they are there. At the first stage, early stages, you cannot actually find them out. So you need spirit of discernment. Like Paul discerned the spirit when he cast out in the familiar spirit in the book of Acts. Paul cast out that spirit. He took time. So even John says in his epistle, discern the spirits. Discern the spirits. So it takes time to discern, because they don't manifest like they are not crying, they are not shouting, the form is not coming out of their mouth, they are not spitting, they are not actually turning their eyes to white. The spirits I'm talking about, they play hide and seek. Sometimes they are singing with you, they are praying with you, they are speaking in tongues, they are fasting with you, they are good tithers, they are well-wishers of the ministry. But at certain stages, the influence is so strong and they come against you and they stand against you and they talk against you and they try to kill and hijack the vision and the visionary. Are you getting me, people of God? Are you with me? Those who can understand me easily, you can type Amen or Hallelujah, and I will just get into the further details. Now, what happened when I announced the judgment? I said, I arrest you until the day of the Lord returns. Until my ministry finishes, I arrest you. Suddenly I heard the voice, no, you cannot arrest till the day of the Lord. I said that, Lord, you yourself, you asked me to arrest this spirit, and now you are saying that you cannot arrest till the day of my return. So what should I do now? And then another voice came that arrest for 14 years. Now, within the spirit realm, I have been given with this very blessed opportunity every time. Whenever I am in any experience, any encounter, any warfare in the spirit realm, I can question back at the very moment when I have a confusion within the time frame of that vision, of the dream, I have this ability to question back if I'm mistaken, if I'm misunderstood there, or I'm misunderstanding the voice. I can question back. When I raised this question, I said that, why should I arrest for 14 years, not for lifetime? And the voice came that in the judiciary system, the crime was not for lifetime imprisonment. The crime is not for lifetime imprisonment. You see, in the Bible times, when Jesus was tempted in the wilderness, it's written there that Satan gets aside for little time, for a period of time. He was not leaving Jesus Christ for the rest of the life and for the rest of the ministry. For a little period of time, he left him. Now come about to the next stage of the kingdom, the Jesus ministry, when he is coming back with 1,000-year kingdom. Again, this Satan will be bound for 1,000, exact 1,000, not 1,000 year and 1 day. Not like this. The punishment, the judgment in the spirit realm is according to the crime. Is according to the in the judiciary, you cannot. If he is accusing you with what you actually speak, or what you have seen, or what you have
you have done with your hands or with your thoughts, the negative thoughts, if he accuses you in the courts of heaven, in front of the throne of our Father God, you are judged accordingly. How come is it possible that if you accuses him, the Satan, the enemy, or any spirit, you can accuse him for what he has not done? I'm taking time to just to focus on this issue, because in Pakistani church, most of the pastors I have heard, with due apology, with I'm not undermining any grace and undermining any authority in this nation, they just try to kill every spirit when they are casting out. They don't know how to deal. When you read Jude, Jude says angels did not actually cursed the opponent party. They could not. They didn't knowingly, because of the authority and the hierarchical structure. Angels, even Peter says the same story, that they didn't do anything wrong in the hierarchical structure. They said that the Lord himself will actually do this. He will condemn you. He will judge you. He will accuse you for what you are doing. We are not. Angels, even in the higher authority, being in the higher authority, they didn't. But people here, ministers here, they are doing everything. Unknowingly, I'm telling you, lack of knowledge is actually killing. And Peter said this so. He said that they are actually earning their destruction because of the lack of knowledge. They think that they know everything. They show off when they are demonstrating power. They are demonstrating the authority. They show off. So through this experience, I learned many things, and the things were actually taught to me in the spirit. You cannot accuse beyond the crime. You cannot judge beyond the judgment in the judiciary system. For every act there is a judgment in the judiciary. You cannot go beyond that limit. If you don't judge accordingly, then you get ready to be judged not accordingly. Similarly, you will never be judged accordingly. This is what Peter said. He said that they try to do this, humiliate the authorities unknowingly because of the lack of knowledge. If you cross the red signal, you will be hit by a car, by a truck, and then you cannot claim that I didn't know at the red signal. I came first time in the city. I never knew. I was brought up in the village. I never knew not to cross at the red signal. No, it's your lack of knowledge. When you are in a kingdom, you should know now the rules. I flew to other nations. I studied the rules. I flew to UAE. I studied the rules. I asked people to teach me the rules because I'm going for a shopping. I'm going for the taxi. I'm going for the picnic. I'm going for the administration. What to do, what not to do. I was in UK. I asked people, should I lay hand or should I take permission before laying hand? Should I do this? Should I not do this? Within every kingdom, you need to learn the rules. Otherwise, then you cannot claim that, sorry, I didn't know. You should know because you are in another territory. So in the spirit realm, you don't cross your limits. Know your authority. I know my rank in the spirit. Twice I was promoted in the spirit. I was caught up in the spirit, and I was in a promotion ceremony. The official notifications I could see, the offices were there, the promotion ceremony was arranged, and my rank was upgraded, and it was properly announced. And then I know that who am I in the spirit. So now the story comes to the judiciary, the knowledge, the study of the spiritual systems. You cannot cast out every demon. There are some spirits you should get rid of.
If you try to resist them, they killed Jesus. They killed every apostle. Stephen was killed by them. It doesn't matter how much power, revelation you carry. You will be removed. I'm telling you. And if your time has not come and you are actually facing a religious spirit, then you get rid of. You run. Better for your life. Are you here with me, people of God? Are you here with me? Those who are here with me, those who have understood this one. The question was asked on a YouTube teaching that then who is death? I said that in that lecture, I said that death actually plays a part behind the scene, behind the curtains, to accuse other reasons, whether it is the accident or the sickness or the killing or the murder, whatsoever, just to remove a person. And when the person is removed, people don't know that the reason behind of the removal of this person is death. They mention that cancer killed him, the tuberculosis killed him, a bullet killed him. No, it's a death spirit. So death will be judged. There is a time of its judgment. It will be cast out in the lake of fire. It's written in the book of Revelation. Are you with me, people of God? Can you understand me what I'm saying? If you go into the book of Revelation 20th chapter 14th verse, let me read it for you. Book of Revelation 20th chapter 14th verse. And death and hell were cast, even hell were cast into the lake of fire. Death. So how do you describe this one? Death, which can be cast out or cast in, into the lake of fire. So it must be a substance, it must be an entity to be taken by hand and be cast into the lake of fire. But at a specific time, not before time, not early. Like when Jesus Christ was dealing with the legion in the graves. And the legion said that don't torment us before time. They knew the time. So their argument with Jesus Christ was actually accurate, actually right. They knew the revelation. They knew the timeline. They knew the judiciary actually. And Jesus knew as well. So Jesus didn't debate with them and argue with them that who are you to dictate me? Who are you to teach me or control me what to do or what not to do? He simply surrendered to that talk done by the legion. And the legion asked them to cast them out into the pigs. Because the torment was actually before time. In the previous verse, you see in the same chapter, in the 13th verse, it's written, and the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up. So sea is visible to you, but death is invisible to you, and hell is invisible to you. It's written, death and hell delivered up the dead which were in them. So it must be a place. Like Jesus Christ is a place and a person as well. We are sitting in Jesus Christ, in Christ rather. Ephesians. We are sitting, Jesus Christ. Christ is a person and a place as well. Are you getting me? So we are sitting in Christ as well.
So dead ones are in the death and in the hell and in the sea as well. So I'm answering this one. Somebody asked this question in chapter 6, Revelation chapter 6, and verse number 8. Let me read it for you. It's last one. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. I actually said that death is a person, and it will be judged in that lecture. I said this. And that person asked me, where is it written that death is a person? So this is the scripture. And I looked, and behold, a pale horse, and his name, a person is sitting on the pale horse, and his name, his, not her, his name that sat on him was Death, and hell followed with him. Hell followed with him. So hell is another entity, death is another entity, and here I take it as a person, as a spirit, death spirit. So you actually seize the operation of the death spirit in a house, in a church. Like God actually gave us the, okay, leave it. I don't want to mention it on air. After this year, I will actually testify it. Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. So for now, I think so it's enough here. And if you have any misunderstanding about this one, or if you want to listen more on this, definitely I'm here, and we will appreciate your questions. You can question on the WhatsApp number given on my social media, and you can question in the messenger as well, and the media team will actually pick those questions, those who are unanswered and unaddressed in the Pakistani church in the context. So it will help actually, your questions will help actually others. So yeah, I believe those who are watching, I should pray for them. Kasib Ashraf, I pray for your business. I pray for your business, your company. Makarado Shalezia Brinde Doshianaman Prakasha Dizia Zeles Sampraman Tindushia. I see a connection in Karachi City. Kasib Ashraf, I see a connection in Karachi City. Tap into this door in the name of Jesus Christ. So if you are blessed, you should support the kingdom work, and you should support the media ministry as well by giving. So yeah, it's time to give. If you want to give, you can give any amount cheerfully, saying that this is man of God, this is my seed, or this is my offering, this is my contribution in the kingdom work. So you can expand the work through this media ministry. The details actually they are given in the comment section, or maybe I can give it to you. You can. So I was actually giving the details. आप उनको स्कैन कर सकते हो, और आप उनको वहां से देखकर अपना कंट्रीब्यूशन खुदावंद के हुजूर ला सकते हो, और आप कह सकते हो कि दिस इज माय सीड, आई वांट टू कनेक्ट. मैं चाहता हूं कि मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाऊं, मैं बरकत पाऊं, या मुझे किंगडम को सपोर्ट करना है. I'm giving details. मैं फिर से उन डिटेल्स को आपके साथ शेयर करता हूं. Just by scanning you can do it, or details are given there.
वहाँ पर लिखी हुई हैं। यू कैन डू इट। You can see me. You can see the details. They are there. Hallelujah. Hallelujah. These are the details. If you can see, चर्च लैंड प्रोजेक्ट के लिए भी आप दे सकोगे। हम चर्च के लिए एक ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं, और अगर खुदावंद आपके दिल में डाले तो आप उस ज़मीन के लिए दे सकते हो। गॉड ब्लेस यू। मैं ज़रूर दुआ करता हूँ फैज़ी जट आपके फादर की जॉब के लिए और आपके पेपर्स के लिए। खुदा के फरिश्ते एंगेज हों और खुदा अपना कभी हाथ बढ़ाए और खुदा मिरेकलसली आपके चेहरों पर से मायूसी को उतारे और शादमानी को भेजे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या आप मुझे सुन सकते हो? अगर आप सुन सकते हो तो ज़रूर आप कमेंट करो। खुदा यीशु के कादर नाम में ईमान से टैप करना शुरू करो इस ग्लोरी में और इस ग्रेस में जो इस जगह पर है। इस ग्रेस में जुड़ जाओ यीशु के कादर नाम में, और ये ग्रेस आपको ऊपर लेकर जाए यीशु नाम में। ईमान लाओ। खुदा ने बड़े बड़े काम किए लोगों के लिए और खुदा आपके लिए भी करने को तैयार है, बट ईमान से आप खुदा से कुछ लेते हो। बगैर ईमान के आप कुछ भी नहीं उठा सकते। शक ना करो, डिक्लेयर करो अपना सीजन यीशु के नाम में, और इसी साल के क्लोज होने से पहले पहले आपके ये दोनों आंसर्स आते हैं और आप खुदावंद में बढ़ते हुए तरक्की करते हैं। जीसस माइटी नेम, यीशु के कादर नाम, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईमान से मेरे साथ आमीन बोलो और ऊंचा आमीन बोलो, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में अपनी बरकत को जारी कर सके। खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है, खुदा से सब कुछ मुमकिन है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बैंक डिटेल्स आर देयर, और जो माइक्रो फाइनेंसिंग एप्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैज़ कैश की, इजी पैसा की, HBL का भी जो है वो स्कैन बार स्कैन कोड यहाँ पर है, और ये इमेज है, डिटेल्स भी हैं, सो नंबर्स भी हैं नीचे, आप इन पर शो कर सकते हो और अपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी सेक्रीफाइस के साथ, अपने सीड के साथ ऑल्टर पर ला सकते हो। मे गॉड ऑनर, मे गॉड ब्लेस यू। आप अपने फ़ोन से अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहते हो, यू कैन टेक द पिक्चर एज वेल, और इसे सेव रख सकते हो। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, अब वहाँ से बाद में भी जाकर देख सकोगे और उन्हें उठा सकोगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, और जितने आप लोगों ने टाइम इन्वेस्ट किया यहाँ पर, वो आपकी ज़िंदगियों में एनलाइटनमेंट को लेकर आए। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्श दिया, बाइबल में लिखा हुआ है। नूर आपकी लाइफ में आप डिस्प्ले होगा। इन एरियाज में आप डार्क नहीं रहे, आप डार्कनेस आप में से भाग गई है, क्योंकि जब बातों की तशरीह की गई है, उसके मुंह की बातों की, उसके कलाम की तशरीह की गई है, जो आपको इसको अनलॉक किया गया है इन वर्ड्स को, वो आपकी लाइफ में लाइट को लेकर आए हैं, और ये लाइट आपके अंदर रहेगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये लाइट आपके अंदर रहेगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड, एंड इफ यू आर ब्लेस्ड, से आई एम ब्लेस्ड। कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम ब्लेस्ड, ताकि हम सब बरकत पाए और दुश्मन शर्मिंदा हो, शैतान शर्मिंदा हो। आपका दिया हुआ डेडिकेटेड होगा, और वो बता दीजिए कि ये किस पर्पस के लिए है। मीडिया के लिए तो हम मीडिया की चीज़ों को अपग्रेड करेंगे, अगर वो चर्च लैंड प्रोजेक्ट के लिए तो हम लैंड के प्रोजेक्ट में उसकी रिसीट काटेंगे, और अगर वो आप किसी और पर्पस के लिए देते हैं, वो थैंक्स गिविंग है या कोई सीड है, वो मेरी लाइफ में आप शो करना चाहते हो, देन दिस सीड विल बी एक्सेप्टेड बाय मी, एंड आई विल डेफिनेटली प्रे ऑन एवरी सीड, हर एक ऑफरिंग के ऊपर। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। आई एम ब्लेस्ड एंड यू आर आल्सो ब्लेस्ड। पास्टर नवीद साइनिंग आउट फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड। लोगों को बताइए कि हम फेसबुक और यूट्यूब पर 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं दोनों ऑडियंस के लिए, और जाकर पास्टर नवीद शहजाद के नाम से
आप यूट्यूब चैनल को ढूंढिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्हाट द स्पिरिट सेज मैं वहां पर लेकर आऊंगा उस प्रोग्राम को, उस कंटेंट को हम वहां लेकर आएंगे। तो बहुत ही टिपिकल लोगों के लिए होगा जो स्पिरिट में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। व्हाट द बाइबल सेज हम यहाँ पर लेकर आएंगे, खुदा हमने चाहा तो। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, एंड आई बिलीव यू लव मी, एंड we are one in the love of Jesus Christ. Blessings. Signing off, Pastor Naveed Shahzad. Amen. Amen.